Okay. So what I was saying is, if you see the group name is Islamic Holistic Education, which actually covers a lot of subjects. It's not just Tajweed we need to learn. We need to learn Aqaid, we need to learn Islamic jurisprudence, we need to learn Hadith and Ilm Hadith. We need to learn lots of things. Okay? So we will start from this week onwards that we will have Monday and Tuesday for Tajweed. That's the 2 days for Tajweed only. Then we will concentrate on Salah, how to offer Salah. We will try to actually, we will try to see what are the wordings of Salah. What does it mean? How to perform Salah exactly. And that will be on the Wednesday. So that's what we said, Salah. So you should write this timetable on the copy as well. I have shown you. No, I'll send you on the WhatsApp. And on Thursday, we will try to work on Hadith. Okay. There is also the knowledge of Hadith, Ilm Hadith. But you are so young. We will not go, too big on it, but we will try to learn Hadith and we'll try to understand what is the Ilm Hadith and so on. And then on Friday, we will have a story time actually. On Friday, we do some story. It will be like Islamic history, Sirah. We take Sahabas, we can take the prophets, okay? The Islamic history. Probably, I have in my mind to talk about the Islamic history, the rich history we have of the Islam, how Islam came into being, like many prophets, what were their, their life stories. It will be fun, but it will be very informative. And we may choose some book someday. Someday we choose book. For example, we may take the book of Dr. Ismail, like Good Character, is a book which is from South Africa. It's a very good book which I know read in my childhood, and I get a lot of benefit from that. So we may choose the books also. Okay, that will be the Friday, and Saturday we will just chill. Okay. So with that, let's start our today's proceedings. So I would like Kaifa to start. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I will correct her later on. First of all, I need to share the screen. Here is a share screen. It's a second share. Okay. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, sir. So, Aisha, last time I told you that if you stop on an ayah, okay? Yes, sir. And this is that stop mark, what will happen to the last letter? The last letter becomes? Aisha will tell me only. Yes. Sir, actually, I was absent. So, can I? Yes, Kaifa or Zan. So, the last letter becomes Sakin. Yes, last letter becomes Sakin. If we stop at a particular, even if we lose the breath and we stop, or we stop at the ayah, which is the ending of the ayah, if we do that, okay, if we stop at the ayah, so last letter will become Sakin. It will have any haraka on it, okay, any tashkil on it will be nullified, and it will become Sakin. Now here it was a ta marbuta, it will become the ta and the dhamma both will go and it will become ha. Right? It's the case with the ta marbuta only that it will not even remain the ta. It will become ha if we stop at it.
Or if it is any letter, like there was a ba dhamma, so the dhamma will not be there, it will become ba sakina. So anytime if you stop at any letter, this is what we say. If you stop at any letter, is it an end of an ayah, or maybe you have lost your breath? So in both cases, we said the last letter becomes sakin, Sakin. right? For example, there is noon here with fatah. So yak ni zuna. It was yak ni zuna. But the moment you see the stop button here, this noon with fatah will change into noon sakina. So what will it be? Yak ni Yak. Zu. yak Zu. ni zoon. So noon will become sakin. This is what we have learned. Yes, again, Aisha, tell me, what is the rule? So when so when we stop on a word, the last letter will be sakin. Yes. Nice. If we see the, close this. So it's the completion of ayah. Small circle is a symbol to stop. Okay. इसमें number होता है. That is the ayah number, the verse number. When you stop the word, the last letter will be sakin. Sakin. So you should write these rules. Okay. And if there is a gunna, when we see the gunna, Yes, sir. yes. If the If meme a or word noon, ends with a letter. no, gunna, gunna. Gunna means if the meme mushadda or noon mushadda, it will elongate two counts and put in a nose, right? Everybody with it? Like for example, here, you see? So this will be han, because the noon mushadda is there. So when there is a noon mushadda, that means noon with the shadda, it will go for the gunna. So we have to do the gunna. Like han, Anna. lahabin, because there's a kasratain. Lahabin. Kasratain is a tanween. Tanween means the noon, right? Yes, sir. Okay, but it will become sakin, so it will go for kalkala. Okay, it will be lahab. There will be no Lahab. there will be no tanween on it. Okay, Yes. it is the red letters are for the kalkala. That's what it's saying. Maq, maq. Here it is maqrab, but the last letter will become sakina. Maqrab. Nice. Maqrab. Now it is a today's rule here. Okay. Now we have the today's rule. Are you ready for that? Yes, sir. Yes, sir. The rule is, because we know that if we have what? If we have the stop of the ayah, that's like this, then we gotta make the last letter sakina. But the rule says, if the last letter has fathatain, if it is the two fatah, that's called fathatain. Okay, that's actually the noon in it. If it is so, then we do tanween. That fathatain means tanween with fatah. Okay, this is the fatah tanween or fathatain, the double zabar or double fatah. We know this now. Azharunisa, do we know this? Yes, sir. Yes, sir. And if we have two kasra, it is called Kasratain. Kasratain. and if we had two Kasrat. dhamma, Dhammatain. 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 mashallah. Azharunisa is so cute, by the way. Mashallah, mashallah. So it is fathatain, kasratain, and dhammatain. Dhammatain. That means tanween with dhamma. This means tanween with fatah, and this is tanween with kasra. So if we have the fathatain, that is tanween with fatah. Okay?
That is, but how we read it? We read it only one fatha and alif mad. So this Fathatain will change into, say for example, it was on the ba at the end, and there was this end stop. There is a stop button here. Okay. 1 second, I'm telling you. If last letter was ba, for example, and it was in the Fathatain or any other letter, it will change to the ba with the fatha and alif madda. This Fathatain will change into fatha. Firstly, ये जो एक इसमें लाइन है वो फतह रहेगी रहेगी, जो ये दूसरी लाइन है ये सीधी होके अलिफ मद्दा बनाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दो फतह तैन ना, दो दो जबर, दो फतह। इसमें एक फतह तो वहीं पे रहेगा, जैसे बा पे था तो वो वहीं पे रहेगा, लेकिन जो दूसरी जो जबर है या फतह है वो खड़ा अलिफ यानी कि अलिफ मद्दा बनेगा। इट विल स्टे वर्टिकल, सो इट विल बिकम बा। Okay, got the rule? See now let's practice. See here. 1 second, 1 second. See the here. See here. Let me just first do one thing. Let me. MashaAllah. Yes. You write first this rule on a copy. Write this rule on a copy. There is wait a second. You will write on copy completion of ayah. Write first this thing. Completion of ayah. Write first this thing. Completion. Write this completion of ayah on a heading. Okay? Write it as a rule. Quickly. सारे दो भी चाय। स्क्रीनशॉट लिया बाद में लिखेंगे। स्क्रीनशॉट लिया बाद में लिखेंगे। स्क्रीनशॉट लिया मैंने। हाँ देखिए, नहीं ये शॉर्ट में लिखो, आप स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। लिखो कंप्लीशन ऑफ एन आया, उसमें रूल रूल लिखो। ये लिखो इसमें नंबर वन लिखो, ये लिखो वन रूल लिखो इसमें, ये लास्ट लेटर विल बिकम साकिन। नंबर वन, लास्ट लेटर विल बी साकिन। कंप्लीशन ऑफ आया, बाकी कुछ मत लिखो, ये सारा जो ये है ना वो मत लिखो। कंप्लीशन ऑफ आया लिखो हेडिंग ऑन द टॉप, और नीचे लिखो नंबर वन रूल। नंबर वन लिखो लास्ट लेटर विल बी साकिन। ठीक हो गया? यस सर। बाकी मत लिखो, शॉर्ट में लिखो, ये द लास्ट लेटर विल बी साकिन, दैट्स इट। लास्ट लेटर विल बी साकिन लिखा आपने? यस फिर सर। लिखो रूल नंबर सेकंड। क्या लिखो रूल नंबर सेकंड। ओके? उसमें लिखो ता मरबूता, ऐसे ता मरबूता, एंड फिर डालो कोलन। ता मरबूता लिखो, फिर डालो कोलन। कोलन के बाद लिखो यहां से इज चेंज टू हा, इज चेंज टू हा। लिखा? ऐसे लिखो इज, ऐसे लिखो इज, यहां से लिखो ये, एक मिनट, ऐसे लिखो, यहां से लिखो इज। पहले आपने लिखा ता मरबूता, रूल नंबर सेकंड, उसके बाद लिखो इज चेंज टू हा साकिन, इज चेंज टू हा साकिन। यानी कि एक तो ये ता भी खत्म होगा और दम्मा भी खत्म होगा। ठीक है, या कुछ इसके साथ होगा, जो भी कुछ इसके साथ होगा वो सारे, जैसे फतह है, कसरा है, तो ये हा साकिन बनेगा। इट विल बिकम हा साकिन। बस इतना लिखो इसमें। लिखा आपने? यस सर। फिर लिखो रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड लिखो आप, इफ द लास्ट लेटर हैज फतहतैन। अब अगर लास्ट लेटर फतहतैन है, वी नो ऑलरेडी नो तनवीन विद फतह, सो लिखने की जरूरत नहीं है। इफ लास्ट लेटर हैज फतहतैन, ओके, लिखा इफ लास्ट लेटर हैज,
फिर देखो यहां से ओनली वन फतह एंड अलिफ मद्दा विल बी प्रोनाउंस्ड। ओनली वन फतह एंड अलिफ मद्दा विल बी प्रोनाउंस्ड, यानी कि जो फतहतैन है इट विल कन्वर्ट टू वन फतह एंड फतहतैन। That means Fathataain will be converted to Fatah and Alif Madda. Alif Mad. Madda. Yes. So I'm saying again, I will repeat. Write like this. The sorry, it should be little slanting. Right. Fathataain will be converted to what? The Fatah plus Alif Mad. Bottom में ऐसे लिखो आप। Bottom में ऐसे लिखो Fathataain will be converted to Fatah plus Alif Mad. ये रूल याद रखो। Now let us practice. Now everybody, question. सर यहाँ पे कैसे ही बोले थे हम, क्या? क्योंकि यहाँ पे लास्ट लेटर अलिफ है। तो वो ये हाँ मैं अभी आऊंगा इसके ऊपर, मैं बताऊंगा अभी। इसलिए खूब आ दो बार नहीं आएगा, मैं बताऊंगा अभी। एक मिनट है। नाउ लुक हियर। हाँ जी। तो बच्चा देखो इधर, बच्चा मेरा बच्चा कहाँ गया है? अरे पेन कहाँ गया? पेन इधर, सॉरी। नाउ लुक हियर, we have here the last letter is the fathatain here. Last letter is having the fathatain because the last letter is here the alif which is sakin, so it won't be read. अलिफ साकिन की तो कोई वॉइस होती नहीं है, तो एंड में आएगा तो ये तो कुछ पढ़ा नहीं जाएगा। तो लास्ट लेटर टेक्निकली हियर इज द बा विच इज हैविंग द शद्दा एज वेल एज द फतहतैन। सो वी आर कंसंट्रेटेड इन द फतहतैन, वी आर इंटरेस्टेड इन द फतहतैन। द लास्ट लेटर इज हैविंग फतहतैन, it will convert into fatah and the alif like this. ठीक है ना? So this will be habba. How will it be? फिर से बता रहा हूं मैं यहाँ पे, वन सेकंड। इसको ऑलरेडी अपना अलिफ था, ठीक है ना? तो टेक्निकली ये ऐसे बनेगा हा और बा, बा को अपनी एक फतह आएगी और एक फतह बनेगा हब्बा, और फिर दूसरा भी अलिफ था इसके पास ये वाला, वो तो पढ़ा नहीं जाएगा वैसे भी। दैट्स अलिफ साकिन। नाउ दिस अलिफ विल बी converted into, this is the alif madda, so it will be to elongation. So habba, शद्दा का काम है, जो शद्दा बता रहे हो, मेरी बात अब सुनो। जो शद्दा का काम है वो आप बा को हब के साथ मिलाया ना आपने, तो आपने इसको पढ़ाना हब। सो हब, बा को सुकून, पहले वाले को सुकून बिकॉज ऑफ शद्दा, और फिर दूसरा बा आपने पढ़ा ना वो अलिफ मद्दा के साथ पढ़ा। इट इज लाइक हब ब। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, गिव मी मिनट। यस यू आर राइट, वेरी गुड। नाउ लुक हियर। पहले बा को शद्दा जो है, जो शद्दा वाला बा है, तो बा दो बार बनेगा। एक बा जो होगा उसको क्या होगा? सुकून, और दूसरा बा जो है उसको अपना फतहतैन है। पहले मैं शद्दा को खोल रहा हूं, ठीक है? हब, तो जो बा के ऊपर आपका शद्दा है, शद्दा कितने बार पढ़ते हैं हम? दो बार। लेटर को कितनी बार पढ़ते हैं? Twice. ट्वाइस। तो ये बा दो बार बनेगा। एक बा बनेगा विद सुकून, और दूसरा बा बनेगा जो वहां पे तश्कील थी। और क्या तश्कील थी वहां पे? फतहतैन। FathaTain. अबू हंजला, आर यू स्लीपिंग? आंसर द क्वेश्चंस, कंसंट्रेट ऑन द ऑन द स्क्रीन। देखो जब आपके पास इस बा के पास जो अब आपको शद्दा है, तो और अगर इसके पास फतह है फॉर एग्जाम्पल, तो ये बा दो बार पढ़ा जाएगा। एक बा के पास सुकून होगा और दूसरा बा जो होगा उसके पास फतह होगा। लेकिन यहाँ पे जब शद्दा आपने खोला, शद्दा ने पहले बा को सुकून बनाया और दूसरी बा को फतहतैन दिया, ऐसे है ना? यहाँ पे पहली जो हा है उसमें पहली बा जो होगी उसको सुकून मिलेगा बिकॉज ऑफ शद्दा, और दूसरा बा जो है उसको फतहतैन मिलेगा। सो इट विल बी लाइक हब, देन
देन देयर वाज अ फतहतैन। अब फतहतैन का रूल क्या है? फतहतैन का रूल है कि भैया अगर लास्ट में आता है तो ये फतह रहेगा और अलिफ मद्दा बनेगा। सो इट विल बी लाइक दिस। अपना हब, हब, बा को कलकला होगा क्योंकि इसे सुकून है, हब। और दूसरा बा जो है उसको सिर्फ फतह रहेगा, फतहतैन में से फतह रहेगा और क्या रहेगा इसको, अलिफ मद्दा। और फिर जो ये अलिफ। अपना अलिफ था वो आएगा पीछे। सो इट विल बी लाइक हब, ब। और ये अलिफ साकिना नहीं पढ़ा जाएगा। ये तो वैसे भी ये अलिफ साकिना पढ़ा नहीं जाता, तो वो भी नहीं पढ़ा जाएगा। अब यहां देखिए इस लेटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट। सो दिस इज इन श। तो अगर नॉर्मली हम इसको पढ़ते हैं, वेरी इंशा नो, इंशा नहीं, इंशा आपने आपने रूल सीखा ही नहीं, फिर आ कैसे है? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरी बात अब सुनिए। अगर आप स्टॉप नहीं करेंगे, इफ यू डोंट स्टॉप, देन दिस इज इन शा, बिकॉज दिस इज अलिफ मद्दा, इन एन, राइट? यस But because सर। the last letter is fathatain, so it will be converted, this an will be converted to a with alif madda. हमजा, इसमें हमजा को जो फतहतैन था वो हमजा विद दम्मा, सॉरी, फतह रहेगा और आलिफ मद्दा आएगा। बिकॉज फतहतैन का रूल क्या है? फतहतैन रूल इज इट कन्वर्ट्स टू फतह प्लस alif mad will प्लस stop. अलिफ। लिसन। Now it will be like this. So how you read it? In इंशा sha, इंशा because this hamza with इंशा fathatain will be converted like this. Is that right? Yes, sir. This hamza with fathatain will be converted into hamza with fatah plus alif madda, because I told you, I'm repeating again, that hamza fathatain will be converted to fatah plus alif mad. So that is what I did. This fathatain is converted to fatah and alif mad. So this will be in sha'a. Yes, question, Zan. Sir, if Hamza is Sakuna, how can we read it? Like, insha. If Hamza is Sakina? Yes. Okay, question is, Hamza has kasra. Example has kasra. So how will we read that? very good, very good. Hamza at last? So question he is, Zanu is saying that Hamza is, say for example, it has fatah only here. So when there is fatah only or kasra only, so that means this rule will not be there. The rule will be that if you stop, it becomes sakina. Hamza becomes sakina. साकिना। I told you for the Hamza sakina, if there is Hamza sakina, it is a glottal stop. It's what? इसके ऊपर आपको जर्क मारनी, ग्लोटल। like insha, insha, insha. That means you will stop at it at the throat. That's called a glottal stop. That's called what? ग्लोटल। Don't forget this rule, that if the hamza is sakina, it is giving the glottal stop. यानी कि ये थ्रस्ट मारना है गले में, like insha. लेकिन चूंकि यहाँ पे फतह नहीं था, यहाँ पे क्या था बच्चा? यहाँ पे फतहतैन था। क्या था? तो Fathataain. अरीफा एंड अरीका, what will be converted to? यस सर। What will be it converted to? सर अरीका एंड अरीफा। इंशा ये तो वाह वाह हो गया भैया। One fatah and alif madda. Yes, one fatah and alif madda. So it will be pronounced as insha. इंशा Again, Nimra. Now you tell me this, how you Yes, sir. pronounce it. Read this. सर आपकी आवाज बीच बीच में You, रुक रही है, हम क्या करें? कचमचे, मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। आपको कुछ सुनाई नहीं देता? ये तो बहुत नहीं, गंदी बात हो गई भैया। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? ब्रेक हो रही है, फैन की आवाज से हाँ। गड़बड़ हो रहा है। फैन 2 मिनट बंद नहीं, करना। फैन ठीक चल रहा है। फैन ठीक चल रहा है, बंद कर दो 2 मिनट फैन। ये इंटरनेट का कुछ इशू होगा।
बाकियों को आती है मेरी आवाज? Yes, sir. Yes, sir. बाकियों को तो आती है, सिर्फ आपको नहीं आती है, क्या मसला हो गया? अब मैंने फैन भी बंद सर किया फिर तो हमारे साइड से नेटवर्क वीक होगा। हाँ, वो मसला हो सकता है। अब इसको हम मारेंगे बाद में, इंटरनेट को छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है? इसको हम ऐशा मारेंगे, ये अच्छा चलेगा। तो अभी आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, हाँ sir. Yeah, very good. We will do little practice and we will stop because I told you just half an hour. You should concentrate on your other studies. We do only half an hour. So now here I was talking about, I was asking whom? I was asking, Me. yes, Hanifa. yes, Nimra, how you read this? Yes. Yushra. This is seen, not sheen. Yus, Yusra. very good. Yusr, because this will convert into this and alif madda. So yusra. Next, Abu Yusra. Hanzala, this one. अबू हंसला तो निंदर किस्म क्या था, कब्बर क्या था? अरे यार, अभी तो समझा मैंने इसको क्या करने का है। ये जो फतहतैन है, इसको कैसे हम स्टॉप करते हैं ऑन द आया एंडिंग? Sufa. सुहुफा, because this will convert into fatah and alif madda. Suhufa. Okay, Sabur, tell me this one. I mean, Shasmin, Yes, sir. Which ones? this one. Raja. Raj, because Ra and Jeen combined Raja. first. Raj, Ja. Okay, next Raj. is Zen. Zen, this one. This one. Ajaba. Very good. Ajaba. Ajaba. Okay. Azharunisa, quickly this one. Azharunisa, quickly. Kha, Damma, Ba. Khub. Hubzan. Khub. Ba ko kalkala ho. Khub, no wrong. Hubzan. No, again wrong. How you say zan? You can't read at the end Fathatain. Fathatain का क्या रूल पढ़ा है आधे घंटे से हमने? अरे आपने तो, Fatah plus हमने तो अभी आधा Alif घंटा Madd. इस पे खर्च किया रूल के ऊपर। Sir, Fatah plus हाँ, शाबाश, फतह प्लस, Alif Madda. yes, it will convert into fatah plus I alif was madda. thinking we have to not pronounce Alif. FathaTain will be converted to Alif Madd. Fatah and alif madda. So how you pronounce it? Khub, Khubza. khubza. देखो बच्चा, एक मिनट। Khubza. एक इसी को अजहर निसा, लोगों में सुनो, देखो यहाँ पे बच्चा, look here. When there is fatahtain, you don't have to read it as a fatahtain. Instead, it will be converted to fatah. It will be converted to what? If it is end only, we are talking about it is end. अगर एंड नहीं होता तो पढ़ते, अगर एंड है आया का तो फतह और अलिफ मद्दा ऐसे बनेगा। अगर यहाँ पे अलिफ मद्दा होता नहीं तो अलिफ मद्दा होता। सो इट विल बी खूब ज, अलिफ मद्दा, खूब ज। समझ आया कि नहीं आया अजहर निसा? Yes, sir. देखो बच्चा, सुनो यहाँ पे, अगर मेरे पास है मीम और देन देयर इज जीम एंड देन देयर वाज ज विद फतहतैन। So say for the meme, Jim was sakina. So only Azhar will tell me. Only Azhar will tell me how will you pronounce it. Meme or Jim is sakina. So meme and Jim combined, it will be Maj. 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 Now this won't be Zan, right? Because Majza. 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 Very good. Why? Because the Fathatain will be converted to Tain Fatah. into Fatah. Into Fatah. It will be converted to this is meme, for example. Maj. This will be za will become fatah and alif madda. So it will be converted to fatah and alif madda. So this will be maj
The. Majza. Very good. Shabash. Kaifa, tell quickly this one. So This one. Rataka. This is dal and this is ra. Dara. Daraka. Daraka. Sabur. Tell me this one. Sabur. Sabur. What happened? Sabur. 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 Not Shasmin. Sabur. Boy of Shasmin. I think he has gone to watch. Me? No, no. Sabur. Sabur. Where is? Me? अरे अब्दुल सबूर को बोल रहा हूँ ना. Sir, he is hiding himself. Yes, sir, he has gone. Bara, tell me this one. Sir, can I read? No, Bara. Sir, can I read? Bara again. मैंने सुना नहीं. Madda. Madda. Very good. Adila. Na. Nabata. MashaAllah. Nabata. How was your exam, Adila? So nice. Yeah, you are in convent? Yes, sir. In which class? 4th. MashaAllah. Where is Nimra? What's her name? Tahleel. Simra. Where is Tahleel? Sir, वो कहीं गई है. Okay, no problem. Who is left out? Abu Hanzala is left out, I guess. Abu Hanzala, tell me this word. No. Yes. Sama is left out. Abu Hanzala ने बोला. Madda. This one. Nafsa. Nafsa. Okay, Usama बच्चा ये बोलेगा. शाबाश, सिंपल है. Lila. अबे ली कहाँ से, फतह को ली क्यों कर दिया? फतह है तो लाई आएगा ना. Laila. In fact, this is yaleen, that is diphthong. Ya sakina preceded with fatha is the yaleen, or what is it called? The diphthong. So it is laila. Okay. Arika? Yes, sir. Arika, this one. Musfara. Mus. Musfara. Musfara. Alif madda last में आएगा. Musfara. Your sister. Salasa. Now this is tricky So, because there is ta marbuta as well as the fathatain. Salasat. sir, please. Yes, Zain. Salasaha. Salasaha. Now let us see how is. He's saying salasaha. What do you say? Salasa. What do you say, man? Is it salasaha? Who will tell me? Salasat. सलासत कैसे आएगा? ता मरबूता का क्या रूल बताया मैंने? हाँ बनेगा और फिर ये रूल यहाँ पे क्योंकि उस पे फता टाइम है तो फता टाइम वन फता एंड अलिफ में कन्वर्ट हो जाएगा. What do you say? हाँ जी. अरे यार मैंने क्या किया? इसको कन्वर्ट किया मैंने. हाँ, क्या बोल रहे हैं जैन का? जैन ने क्या रूल बताया? जब ता मरबूता का क्या रूल है, पहले वो ये बता मुझे. What is the rule of ता मरबूता? हाँ, अभी को पूछ रहा हूँ ना मैं. What is the rule of ta marbuta? Shabash. What is the rule of ta marbuta? Yes, Arika. What is the rule of ta Sir, marbuta? ta marbuta is changed to ha sakina. Sir, Very it good. will be changed to ha sakina. Arifa. Saha. Yes, sir. This is wrong. Here's wrong. You are right, Zan. The book is written wrongly. Now look here. Yes. Now, firstly, if there's a ta marbuta, if there is what?
Ta marbuta. What is the rule of ta marbuta? Tell me. Then tell me what's the rule? When you stop, it will become ha, but when you continue from it, Will it become ha or it become ha sakina? That's the point. Sir, ha sakina. Ha sakina. So that means with the for the ta marbuta, this ta and fathatain, everything is gone. So it will become ha. So there is no fathatain left. So it is thalatha, not like thalathaha. But I give full points to Zan because he applied the both rules. That's very good. I will tell you. If it is the fathatain at the end, it will be converted to fatha and alif madda. Fatha and Alif. But if it is ta marbuta rule is whatever is on the ta marbuta, like it is dhamma or fathatain or kasratain or anything, they both are gone. It will become ha. What? ha sakina. It will become ha. There is no fathatain at all because ta marbuta rule is that tashkil is gone, na. So fathatain to raha hi nahi. So Zen is wrong at So it will be thalatha. It will be ha only. Thalatha. Not thalathaha. Because ta marbuta raha ही नहीं. ये ha बन गया. वो भी साकिना वाला. Okay, we end with that and we continue this class. Okay? Allah Hafiz and Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hafiz. Ma salam. Sir, assalamu